Good morning, children. So, today I am going to start the last chapter of this session, that is chapter 9, and the name of chapter is Biomolecules. Now, I kept this chapter for last because it is a logical chapter which is very important for us to study. Biomolecules. Chapter 9. I simply ask one question. We all are like different countries, developed countries, they are sending different missions to the different planets, moon. The first ever project for the moon was done by Russia, and then again by Russia, and then USA, and then France and Germany, and many other countries. Yeah. So much so that our country, India, is also send our mission to moon. What are we doing? Why we want to? Why we have that intention? Secondly, when many of these missions are going to the other planets also, we had Mars missions. Similarly, other countries also send their mission. What they search there? At the end of the mission, they are bringing some sample of the soil out. What is the need? Do we in India or do in this earth we don't have soil enough that we need certain pieces of soil from other countries, other planets, sorry, not other countries, other planets. What is our aim? What is our intention? See, children, we just simply want to know whether there is any possibility of existence of life there. Is there any such possibility of such existence of life today, or was it existing in the past? This was our main aim. So, how will we come to know? So when we study, when we analyze these soil samples, stones, different material from the other planets, if it has got any organic molecule, any in the sense any organic molecule, maybe protein, carbohydrate, fat, vitamin, mineral, water, soil, cellulose, or any of these things, that means either life is existing today or it was existing in the past, because organic substances are not formed on their own. They have to be formed only and only by living beings. So that is one of the main reason of our study. Okay, now organic molecules, the living, that is the biomolecules, are very important topic. First of all, we just want to know why living beings are made up of only on certain type of molecules, not on the non-living matter like calcium carbonate or silica or any other substance which are so abundantly present. Why body has to make or use proteins, carbohydrates, fats, DNA, RNA, other substances. Secondly, we want to know that what is their importance, each one of these things. Okay. So when we talk about these biomolecules, they have got some important characteristics, some important phenomena of their own. And just for the sake of study of the biomolecules, we just divide them into two types, that is the micromolecules and macromolecules. So these are the micromolecules and these are macromolecules. Micromolecules includes all monomer units. Of carbohydrates, proteins, fats, nucleic acid. Even they not necessarily monomers, but they may be up to oligomolecules. Oligomolecules. Generally, they have a molecular weight less than a few hundred. Whereas the macromolecules includes complex carbohydrates like cellulose, starch, glycogen, variety of proteins are there, then nucleic acids are there. Now nucleic acids are of two types, that is DNA and RNA. So we have to study about all these molecules, and
I am not teaching word to word from the book because there are so many things which are given in the books which are not so important, and there are so many things which are haphazardly written there also. So this topic I am teaching of my own way so that you can easily understand it, and the same chapter will be used in class 12 chemistry also. So you please pay attention here. So we have divided the molecules into this, and with this there are some inorganic substances also there, and some organic other substances like vitamins are there, some hormones are there, about which we may not study in this chapter, and water is there, and then certain minerals are there, certain type of oils are there, fats are there, and all. So these are the things which we have to study here. Let us talk about the monomer units. Start from our study from there. Okay, and then in your book there is some activities given that you can bring some of the living parts, that is the parts of the living beings, maybe liver, maybe skin, maybe heart, maybe kidney or etc., and then crush it into the some solvent, and then filter it using some type of filter paper. Those substances which are filtered down, they are the micromolecules. Those which remain up in the filter paper, they are the macromolecules because they cannot pass, they are large in size and they cannot pass through that the filters. Okay? So that is how we can differentiate. Okay, without taking too much of time, I will start with monomer of carbohydrates. If you see the name, carbohydrates consist of two words, carbo, that is carbon, hydrates is water. So carbohydrates are actually consist of carbon, hydrogen and oxygen, and their monomer units are called monosaccharides. And if we follow this thing, monosaccharides are generally following a formula of CnH2nOn, or I can put it this way, CnH2O, and here comes, that is, they have got as many number of carbon as number of molecule of water are there, or as many molecules of water are there as many number of carbons are there. This is on the basis of their empirical formula. Okay, the truth is that they don't have water. Anyway, the carbohydrate, the number of C, that is N, varies from 3 to 7. Okay, and when we give them IUPAC name, we add a suffix of OSE to the Greek number of carbon. Say for example, if the carbon number are 3, we call them triose. If 4 is there, then tetrose, tetra, and OSE, so tetrose. 5 is there, so penta. So 8 are the 4, 6 are the pentose. 6 is there, so heptose, OSE, right? And 7 is there. This is hexose and that is heptose. Hexose and heptose. The word hep actually stands for sept. The heptose actually stands for septose. Septose means 7. Okay, so this is how these are being come. So the formula also, you can see that in the 3 carbon will have a formula of C3H6O3, C4H8O4, pentose will have C5H10O5, hexose will have C6H12O6, and 7 heptose will have C7H14O7. Come to the functional group which they got. So they got 2 kind of functional groups. You already studied about functional groups in class 10, and you have also studied that the 2 type of functional groups which are oxygen containing molecules are there. They may be either aldehyde or they may be ketone. So depending on them, the 2 type of sugars are there, that is aldehyde sugars and the ketone sugars.
Okay, so if you see, that is the most common example, glucose, so it is aldehyde sugar, and its other part, that is the fructose is there, so that is ketone sugar. Okay, so this is how they will be. Let us see the structural formula of one by one: triose, ketose, pentose, hexose and fructose. We'll not do all, we'll do of triose, then we'll do of pentose, and then we'll do of hexose, because these are the most commonly used what you call monomer, and that is why we study about them only. What is the sense of studying those substances which are not very commonly used or found in the living beings? Okay, they are found, I did not say that they are not found. So in the higher classes when you will go, you will study about them. Let us talk about triose. Triose are in the two different forms, that is glyceraldehyde, that is the aldehyde, and ketone called as dihydroxyacetone. तीन कार्बन 1 2 3 aldehyde. You can count. Okay, so this is actually glyceraldehyde. You can see the number of carbon 1 2 3, number of hydrogen 1 2 3 4 5 6, number of oxygen 1 2 and 3. So the formula we have written C3H6O3. Exactly it is following. Now the ketone, that is aldehyde, is known as CHO is aldehyde. Aldehyde is always found on the one end, either on the top or on the bottom. It will never be found in the center. Whereas the ketone is always found in between, not in the first and last carbon. So ketone, this is ketone one. Okay. Okay, so this is glyceraldehyde, dihydroxyacetone phosphate, dihydroxyacetone, sorry, not phosphate. So number of carbon 1 2 3, number of hydrogen starting from here 1 2 3 4 5 and 6, number of oxygen 1 2 3. Okay, so the same formula C3H6O3. Okay, now both these sugars are a part of photosynthesis and a part of respiration. Okay, so in the photosynthesis process, the PGA is formed, that is phosphoglyceric acid. Okay, and phosphoglyceric acid will change into phosphoglyceraldehyde. So that phosphate group is there, and that is one of the hydrogen will be replaced by the phosphate, and this molecule will be used there, and then it will change into PGL, and PGL will change into glucose. So then 6 carbon compound will be there. The same is there. So we have already done photosynthesis, we have already done respiration, and these wherever there we have studied the phosphoglyceraldehyde or phosphoglyceric acid, and all these are the derivatives of this substance. Okay, and then the glucose whatever is formed. So these are the things. So these are the simplest sugar, 3 carbon sugar, sweet in taste. Whenever we are talking about the monosaccharide, they are crystalline substance, white in color, soluble in water, sweet in taste. Okay, and they are even soluble in organic solvent. Now most of the higher organic molecules are insoluble in water, but they are soluble in the organic solvent. So this is smaller molecule, even monosaccharide all the monosaccharides are soluble in water. Okay, so that is the difference also. So we are done with the two type of functional group, 3 carbon compound trioses. If we talk about pentose, then we'll talk about only aldehyde sugar, not of ketone sugar, and aldehyde sugar of pentose, that is ribose and deoxyribose. Two different forms of these are there, C5H10O5. This is ribose. So I will write here C5H10O5, and deoxyribose will have C5H10 and O4. One oxygen is less. So this is deoxyribose. So मैं इसको हटा देता हूँ से, this was the functional group, and this is ribose, and that is deoxyribose.
You know where these molecules, these sugar molecules are used. These are used in nucleic acid, that is DNA and RNA. They are also used in the nucleotides and nucleosides. And you know that when the phosphate molecules are attached with it, तो वे nucleotides बनाएंगे. And nucleotides जो होंगे, they are even energy storing molecule, that is ATP, GTP and all, which we already studied. तो we shall start about ribose. Ribose का फॉर्मूला हो गया C5 1 2 3 4 and 5. Aldehyde sugar, so OH is there and O is there and H is there. Then this is H and this is OH. Strangely, the third number carbon, the position of H goes in the other direction. And here HHOH, or I can write it as C2OH, CH2OH. Okay, now this is the formula. This is the formula. Now there are carbon molecule we already studied in 10th. That is the carbon compounds are either found in the straight line, or they are found in the straight form, or they are found in the branch form, or they are even found in the cyclic manner. This is straight. Now sometime, or rather most of the time, this sugar molecule जो है ये वाले गड़बड़ करके cyclic बना लेते हैं. कैसे बनाएंगे cyclic? This OH will come here, and as a result what will happen? Its valency जो है कितने होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए. कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो 1 2 3 4, अब ये 5th आ गई, तो 5 तो नहीं हो सकती, और इधर 3 ही रह गए, 1 2 3 हट गए यहाँ से. So what will happen? This O will stretch its arm up to here. So मैं इसको लाइन डॉट्स दूंगा. So अब ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, and a bond is formed between फर्स्ट and लास्ट but 1/4 नंबर पे, और यहाँ एक H है और यहाँ एक OH है, यहाँ एक H है OH. This is OH here and H here. Now at 1 2 3, so the fourth one is there, and here it is. So now it formed the ring form. कहाँ बना रिंग? रिंग तो बन ही नहीं. तो रिंग कैसे बनता है? देखिए हम इसको लेबल देंगे. दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन. ठीक है, लेट अस रीअरेंज देम. लेट अस रीअरेंज देम. कैसे होगा रीअरेंज? देखते हैं. बड़ा अच्छे से होता है. कैसे? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन. कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5. 1 पे क्या है? H and OH बना दी. H and OH. सेकेंड पे क्या है? H and OH. H OH. थर्ड पे क्या है? OH and H. OH ऊपर लिख दो, H नीचे लिख दो. फोर्थ पे क्या है? केवल H. ये फिफ्थ पे क्या है? H2OH. तो ये H2 and here OH, and there is a link between first and fourth. ये first and ये fourth. So this is how ribose sugar is represented. So generally हम इसको, जब तक आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं पूछा है तब तक आप राइबोस को मेंशन करेंगे दिस वे. If you make a molecule like this, it stands for ribose as well as for deoxyribose. ठीक है, so it is a general way of representing. like अपने बेंजीन को रिप्रेजेंट करने का पड़ा है, आप हेक्सागन बना लेते हैं and every alternate carbon has double bond. ठीक है, and it is ribose. Ribose is represented in this manner. Is it clear? Deoxyribose will also be represented like that unless the molecular formula is asked. आप यही बनाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप ये वाला बनाएंगे. राइबोस समझ आ गया? कहाँ काम आएगा राइबोस? आरएनए में. आरएनए में कैसे काम आएगा? दैट विल स्टडी इन द फॉलोइंग क्लास. दैट इज व्हेन वी विल स्टडी अबाउट डीएनए और आरएनए. देन वी विल स्टडी अबाउट हाउ राइबोस विल बी यूज्ड इन मेकिंग आरएनए. ओके, एंड ये जो हमारा 8 मिनट्स. ओके जी, सो राइबोस is clear to you. We shall study with deoxyribose.
तो डीऑक्सीराइबोज में क्या होगा, एक कार्बन हट जाए, एक ऑक्सीजन हट जाएगा, कार्बन उतना ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन उतना ही है, तो यहाँ पर लिख देंगे डी, डी मतलब लेस, ऑक्सी, यू नो ना, डी का मतलब लेस होता है ना, डी एक्सेलरेशन, डिमोशन, है ना। तो जहाँ डी लग जाता है ना, उसकी इज्जत खराब हो जाती है, खत्म हो जाता है, वो कुछ खत्म हो जाता है उसमें से, तो दैट इज इट। तो इन डीऑक्सीराइबोज क्या होता है ना, इन डीऑक्सीराइबोज दिस फोर्थ नंबर का जो बॉल, थर्ड नंबर का जो मॉलिक्यूल है, थर्ड बॉल, उसमें से ऑक्सीजन हट जाएंगे, तो यहाँ से भी ऑक्सीजन हट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, आपको मतलब आप हाइड्रोजन लिखेंगे, हो गया डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। सो डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज, टू शुगर्स, दोनों हमारे एल्डिहाइड शुगर है, और दोनों के अंदर जो फर्क है वो एक कार्बन का है, एक ऑक्सीजन का है, कार्बन उतने को नहीं है, हाइड्रोजन उतने को नहीं है, ऑक्सीजन एक कम हो गया, और उनकी यूटिलिटी अलग अलग है। डीएनए जो है बनाने के लिए डीऑक्सीराइबोज शुगर काम आएगा, आरएनए बनाने के लिए राइबोज शुगर विल बी यूज, एंड देयर फंक्शंस आर, तो दिस इज द थिंग। नाउ वी शुड स्टडी अबाउट 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन शुगर मोनोसैकेराइड, कौन सा है 6 कार्बन का, 6 कार्बन का जो है वो है लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, हेक्सोसिस एंड हेक्सोस, 3 तरीके हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। हेक्सोस 6 कार्बन वाली शुगर, वैसे लगती है शुगर हो गई, हेक्स मतलब 6, हेक्सोसिस आर ऑल्सो 3 टाइप्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। फॉर्मूला बनाते हैं, सेम है फॉर्मूला हेक्सोस का, कोई चेंज नहीं है, C6H12O6, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, एंड ये भी एल्डिहाइड है। पहले और तीसरे को पहले बनाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, HO, HOH, OH, H, HOH, HOH, H and OH, and ये गिन लीजिए कार्बन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑक्सीजन गिन लीजिए 1 2 3 4 5 and this one is 6, ठीक है, वेरी सिंपल, कोई झंझट ही नहीं है इसमें, कोई डर ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कुछ क्या कहते हैं अनयूजुअल नहीं है। अभी यहाँ पे भी क्या करना है, ये वाला OH को यहाँ से यहाँ पे, और एक बॉन्ड इसके और इसके बीच में बनाना, ठीक है, तो बनाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट एंड फिफ्थ के बीच में ब्रिज बना दिया, यहाँ H OH H OH OH H H OH H H2 एंड OH, ग्लूकोज का रिंग फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसको कैसे देंगे, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। So its structure will come, I shall rub it, I shall rub this one. First carbon, second carbon, नहीं ये फर्स्ट कार्बन है, ये ऑक्सीजन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, fifth carbon and sixth carbon. Sixth carbon has got H2OH. फिफ्थ और फर्स्ट के बीच में ऑक्सीजन है, इस पे HOH, HOH, थर्ड में OH उल्टा हो गया, HOH and H. This is called glucose. ग्लूकोज को हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लाइक है
चूहा with tail. So this is called glucose. Whenever glucose molecule you have to represent, you can draw like this. Okay? Very simple. Hexagon with a tail. The tail here means 6 number of carbon. इसकी जगह अगर गैलेक्टोज होता, कोई फर्क नहीं है खास, कुल मिला के एक फर्क है कि थर्ड तो थर्ड, फोर्थ वाला भी अपना ओरिएंटेशन चेंज कर दिया. सो इंस्टेड ऑफ वन दैट इज थर्ड कार्बन, द थर्ड एंड फोर्थ कार्बन बोथ विल हैव OH and H in the reverse order. So here this is third carbon and this is the fourth carbon. Oh yes sir. Galactose. Glucose and galactose, both the molecules are aldehyde sugar, both are having same general formula C6H12O6, and glucose is very commonly found, galactose is not as common. ठीक है, and glucose is the energy molecule for us. Glucose is found in the blood in the form of blood sugar level. Glucose polymerized to make what you call starch, नहीं starch भी बनाएगा, ग्लाइकोजन भी बनाएगा, सेलुलोज भी बनाएगा, और डाइसैकराइड के अंदर स्ट्रक्चर क्या कहते हैं सुक्रोज भी बनाएगा, माल्टोज भी बनाएगा एंड फ्रक्टोज भी बनाएगा. तो ग्लूकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लूकोज इज stored in our body in the form of glycogen in animals and fungi, and in the form of starch in case of plants. एंड फिर हमने पढ़ा था अलग अलग टाइप के एलडीज के अंदर ये कुछ अलग अलग नाम से मिल रहा है. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ग्लूकोज के बारे में. फ्रक्टोज जो है उसका वो पढ़ लेते हैं. फ्रक्टोज इज द फ्रूट स्वीटनिंग शुगर. ज़्यादातर फ्रूट्स के अंदर फ्रक्टोज मिलता है इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज. तो फ्रक्टोज यू नो दैट इट इज एल्डिहाइड शुगर. पढ़ लेना बच्चे, क्या है बहुत ईजी है, ज़्यादा नॉलेज को पढ़ना, आसानी से पढ़ना है, ज़्यादा भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है. आज हमारे पास खूब टाइम है ना. चीज ओनली केमिकल्स. हाँ, फ्रक्टोज बनाते हैं 6 कार्बन लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6. सेकेंड नंबर पे कीटोन है, यहाँ पे H2OH, OH H, HOH, HOH and H2OH. This kind of bridge will form between first and second and fifth. तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 and the sixth, and a bridge is formed between this and this. ये वैसे के वैसे पड़ा है, यहाँ पे H है, यहाँ OH and H, H and OH. This is H here and H2 and OH. ठीक है. So when we form the ring form structure for that, the first number carbon as such पड़ा हुआ, second, third, fourth, fifth और ये 6 नंबर यहाँ है, और इसके और इसके बीच में बॉन्ड है. H2OH, H2OH, H, H, 1, H, OH, and OH and H. Fructose. So glucose, fructose and galactose, 3 sugars we are done. मैंने आपको इनके नाम बता दिए, इनका फॉर्मूला बता दिया, इनके फंक्शनल ग्रुप बता दिए, इनका टेस्ट भी बता दिया. ग्लूकोज का टेस्ट होता है वेरी सिंपल. टेक सम ग्लूकोज और एनी एल्डिहाइड शुगर, एल्डिहाइड शुगर, एनी एल्डिहाइड शुगर. क्या करना है, इसको डिजोल्व करने से वाटर में, add a few drop of Benedict solution, Benedict, ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ग्लूकोज प्लस Benedict solution which is bluish color लेकर के मिला दीजिए. then heat it and its color will change either green, yellow
ऑरेंज, रेड और डार्क रेड। ठीक है, तो ये जो है प्रोग्रेसिवली शुगर के कंटेंट को, एज मच शुगर इज देयर दैट मच ऑफ डार्क कलर विल कम। ठीक है, इफ यू डोंट हैव वेनेडिक्ट सॉल्यूशन वी कैन इवन यूज इसकी जगह पे इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन देयर इज अ सब्सटेंस, देयर इज अ केमिकल नॉन एज फेरिन सॉल्यूशन। दो तरीके होते हैं, ए प्लस फेरिन सॉल्यूशन, दोनों को मिला दीजिए एंड रिजल्ट विल बी सेम। ओके, कीटोन शुगर्स विल नॉट गिव दिस टेस्ट, दे विल फेल टू गिव दिस टेस्ट। तो आपको पता करना है ग्लूकोज है कि फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज ये टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो ये टेस्ट हो गया, फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ लिए, यूजेस हमने पढ़ लिए। ग्लूकोज सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला सब्सटेंस है और ग्लूकोज के काफ़ी सारे पॉलीमर्स बनते हैं एंड ग्लूकोज के पॉलीमर जो है वो एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल भी है, स्ट्रक्चर फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स भी है। ठीक है, तो अबाउट दैट इन द टुमारोज क्लास में आज अपने मोनोसेक्राइड्स को पढ़ लिए, पूरे डाइसेक्राइड भी पढ़ा देता हूँ और उसके बाद क्लास वाइंड अप कर देता हूँ। व्हाट आर डाइसेक्राइड्स? डाइसेक्राइड्स नेम इंडिकेट्स दो मोनोमर यूनिट्स को जोड़ के बनाएंगे डाइसेक्राइड्स। मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड जिनका फॉर्मूला है C12H22O11। कैसे बनेंगे? C6H12O6 प्लस C6H12O6, जो एक पर सिर्फ फिक्स है कि वो ग्लूकोज ही होगा। इधर इट कैन बी ग्लूकोज और इट कैन बी फ्रक्टोज or it can be galactose. So when these two molecules come together, one molecule of water will come out. So one molecule of water कैसे? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने कहा ये 6 तो मारे थे, 6 तो 12 भी रहेंगे, C तो, और H24 - 2 दैट इज 22 रह जाएंगे। ऑक्सीजन 11 - 1 दैट इज 12 - 1 दैट इज 11। ठीक है, चलिए सर, तो कौन कौन से क्या क्या बनते हैं? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज आर फॉर्म्ड बाय, आई सेड वन शुगर विल ऑलवेज बी ग्लूकोज, अदर वन कैसे? फ्रक्टोज और ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ओके, सो दीज आर द डाइसेक्राइड्स। ओके, डाइसेक्राइड्स कैसे बनते हैं ये भी बना देते हैं, उसी को ऊपर वाले को मिटा देते हैं। मान लीजिए दो ग्लूकोज के बीच में बन रहे हैं, तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये बना देता हूँ, दो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज। यहाँ पे इसके पास H है, OH है, यहाँ भी इसके बाद HNOH है। इट वॉज OH here, H here, H here, OH here, H here, OH here, CH2, OH, H here, OH here, OH here, H here, CH here, and OH here, and H here, and C2OH. Now what happens? This H and this OH will come out in the form of water molecule. So there will be an oxygen bridge. So हमने कहा आपको कि आप ग्लूकोज ऐसे भी बना सकते हैं और ये ऑक्सीजन ब्रिज, एंड दिस इज अनदर ग्लूकोज। ठीक है,
So this is how disaccharide molecule is formed. The bond which is formed here, this is called as GLYCOSIDIC, glycosidic bond. And when the glycosidic bond is formed like this, it is called alpha glycosidic bond. So we are going like this. And अगर वो बीटा होता तो क्या होता, एक शुगर का पूंछ ऊपर है और एक शुगर का पूंछ नीचे हो जाता। Okay, so the bond is between 1 and 4, first carbon of 1 and fourth carbon of second. But अगर वो उल्टे सीधे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, then we'll call them as beta. And if both of them are in the same orientation, then we'll call alpha glycosidic bond. तो I think this is clear to you. मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड पूरे हो गए हमारे. पॉलीसेक्राइड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंड फर्दर नेक्स्ट क्लास में DNA RNA वगैरह पढ़ सकते हैं. Okay, so this is what of today's class. Thank you, children.